Hi Indrajit, good morning and welcome on YourPedia. Yeah, thank you, sir. Indrajit, you got selected in management trainee Hindustan Aeronautics Limited as electrical engineer, and I congratulate you for this wonderful selection. Yeah, thank you. इंद्रजीत बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है HAL और इट इज गोना मेक अ बिग नेम फॉर आवर कंट्री इन फ्यूचर इट्स स्टिल इज डूइंग वंडरफुल और आगे बहुत ज्यादा स्कोप है इस ऑर्गेनाइजेशन का और बहुत सा बच्चा इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता है और नाउ यू आर इनटू दैट सो आई विल बी डिस्कसिंग विद यू एंटायर प्रोसेस जो आपने फॉलो किया एंड मोर डिटेल में वी विल डिस्कस अबाउट योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस दैट इज व्हाट स्टूडेंट वांट टू नो तो हम उसके बारे में चलेंगे सो फर्स्ट आई स्टार्ट विद योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन विच व्हाट वी एक्सपेक्ट यू टू टेल अस इज आप कहाँ से हैं आपने अपना ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से किया ग्रेजुएशन के कॉलेज का आप नाम मेंशन कर सकते हैं सो दैट अगर कोई स्टूडेंट है वो आपके साथ कनेक्ट हो सके आपका जूनियर एंड आपने उसके बाद क्या किया आपकी जर्नी कैसी रही जो जो आपने एग्जाम लिखे आपका नहीं हुआ हुआ सारा कुछ शेयर करें आप जल्दी से टिल यू लैंडेड अप इन दिस सिलेक्शन Yeah, sure, sir. So, I am Indrajit Mukherjee. So, I basically belong to Paschim Bardhaman district of West Bengal. And I have completed my graduation in electrical engineering from University Institute of Technology, the University of Bardhaman in 2018. And after that, I didn't get any job from campus placement because at the time the companies were not coming in our campus also. So what I did, I just prepared for GATE and ESE examination. And in 2019 itself, I could able to crack GATE exam. And I took admission in Indian Institute of Engineering, Science and Technology, Sibpur. So from there, I have completed my master's in electrical engineering itself in 2021. And in 2021 itself, I got placed into a software company. Then from then, I'm working in that software company as a software test engineer. And during this phase, starting from 2018 to 2023, so in these 5 years, I have appeared for many exams. Like in HL also, I have appeared in 2021. Unfortunately, I missed the written exam by 3 marks. And so this was my second attempt in HL exam. And apart from HL, I have appeared for Coal India written exam. That also I didn't able to clear the written. Then RINL, that is the Vizag Steel. So that also I appeared, but unfortunately I couldn't clear. And even I appeared for GATE exam also. So I got good decent rank, but I could only got call from IOCL last year, which I could not convert. And this year also I got call from IOCL, and the interview is there on 31st of October. And during this preparation of this technical examination, so this year I could able to crack HL 2023. So the exam was on September, and I got 131 marks out of 160, and the cutoff was 127 for undeserved category. So then I got interview call. 127 was cut off and you got 131. Correct. Yeah, exactly. Oh, wonderful. So you were sitting at the border only. Yes. Okay, now Indrajit, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन आपने सारा बहुत ब्रीफली सब कुछ बता दिया कि आप जॉब और इतने साल आप जॉब करते रहे सारी योर जॉब वाज गोइंग ऑन Yes. Right now also I'm working in that IT company also. अच्छा इंद्रजीत एक क्वेश्चन पूछूंगा बहुत से स्टूडेंट ये जॉब छोड़ देता है बोलता है कि नहीं, हमसे नहीं बैलेंस हो रहा है जॉब छोड़ देंगे बट यू केप्ट ऑन डूइंग जॉब एट द सेम टाइम यू केप्ट ऑन गेटिंग द कॉल्स आल्सो IOCL ये वो आपका आता रहा तो व्हाट इज योर सजेशन टू स्टूडेंट्स हु मे बी गेटिंग दीज काइंड ऑफ जॉब्स एंड हु मे बी थिंकिंग कि मैं करूं ना करूं क्या करूं व्हाट इज योर ओपिनियन No, so if you see, so it's possible to prepare along with job, and if you have a job, then that will be act as a kind of backup, and at the same time, there is a cost involved, right, in filling up all the forms and applications. So you can able to pay those costs by your own. So you don't have to take money from your parents or from somebody else. You can put your own money into those applications. So yeah, it's quite achievable if you do job and side by side if you prepare. So you can able to crack if your preparation is good. Okay. Okay. And next question, Indrajit, I'll ask you is in HAL, you scored 131, as you said, and the cutoff was 127 for unreserved candidate. So Correct. you were only 4 marks above this. My Yes. question to you is HAL के इंटरव्यू वगैरह में कितना वेटेज था इंटरव्यू का रिटर्न का Yeah. कितना वेटेज था और जब बॉर्डर पे कोई बच्चा होता है जैसे IUCL में बहुत से बच्चों को कॉल आता है जब बॉर्डर पे कोई बच्चा होता है उसको लगता है कि साहब उसका इंटरव्यू होगा नहीं और वो तैयारी भी नहीं करता फिर और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एज अ मेंटर आई एम फेसिंग स्टूडेंट कॉलिंग के सर मेरा IUCL में कॉल तो आ गया है लेकिन आई एम गेटिंग वेरी लेस मार्क्स आई मीन मेरे गेट स्कोर उतना नहीं है तो शायद मेरा नहीं होगा
तो उस डायलेमा को कैसे रिजॉल्व करना है? सर ये सेम क्वेश्चन और ये सेम डाउट मेरे मन में भी था, लेकिन मैंने आपको पूछा था ये क्वेश्चन, बट आपने बोला था कि आपको कॉल मिला है, इसका मतलब आपको चांसेस तो है, नहीं तो वो लोग खुद का भी टाइम वेस्ट नहीं करता, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करता। तो ये आपको बुलाया है इसीलिए गया है कि आपका चांसेस है, और आप अगर अच्छे से इंटरव्यू देंगे तो ये कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या किए कि हम प्रिपरेशन नहीं छोड़े, प्रिपरेशन करते रहे। टेक्निकल स्नैप दिए, फिर आपका योरपीडिया का एचआर स्नैप आपसे दिए, आपसे 3-4 स्नैप दिए, और वो कॉन्फिडेंस आ गया मेरे में, और उसके बाद इंटरव्यू क्रैक हो गया। तो एचएल में अगर बोले तो रिटर्न का 85% वेटेज था, और इंटरव्यू का ओनली 15% वेटेज था। और मैं भी जस्ट क्वालिफाई किया था, मतलब रिटर्न कट ऑफ मार्क्स से थोड़ा ही 3-4 मार्क्स ज्यादा मिला था। लेकिन फिर भी आपने जो बोला था कि आपको कॉल किया इसीलिए गया है कि आपका चांसेस है, तो इसीलिए मैं प्रिपरेशन को नहीं छोड़े, प्रिपरेशन हम करते रहे और फाइनली सिलेक्ट हो गए सर। तो चलिए इंद्रजीत, आपकी तो देखो सिलेक्शन हो गई एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी नाउ। मान लेते सिलेक्शन नहीं भी होती, मान लो कि सिलेक्शन नहीं भी होती है, तो ये जो इंटरव्यू का तो आप तैयारी करते हो और बहुत अच्छे तरीके से आगे जाते हो, इसका तो बेनिफिट कहीं ना कहीं होगा आपको फ्यूचर में। क्योंकि डेफिनेटली ऐसा सर। नहीं है कि साहब आप पहली बार जाओगे सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे आपने बताया कि मैं ट्राई कर रहा हूँ सर, एचएएल का पहली बार रिटर्न नहीं हुआ, इस बार फाइनली सिलेक्शन हो गया। आईयूसीएल का पहली बार इंटरव्यू नहीं हुआ, इस बार फिर से हम्म। कॉल है एंड आई एम वेरी श्योर यू गोना मेक इट। तो ये तो प्रोसेस है ना पूरी। या। प्लीज गिव द सजेशन टू द स्टूडेंट हु आर लिसनिंग टू यू। मैं तो बोल बोल के थक गया, आप कुछ बोल के उनको बता दीजिए कि कैसे करना चाहिए, हाउ टू टेक द थिंग्स एक्चुअली। सर होप तो नहीं लूज करना चाहिए, आपको प्रिपरेशन के फेज में ही रहना चाहिए, मतलब आपको गिव अप नहीं करना है, आपको प्रिपरेशन करते रहना है। सक्सेस तो मिलेगा ही, मतलब अभी नहीं मिलता है तो 2 साल बाद भी मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं ये टेक्निकल नॉलेज काम भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है टेक्निकल फील्ड में, आपका स्टेट का भी बहुत एग्जाम है, आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का बहुत एग्जाम है, फिर गेट है, ईएसी है, एसएससी जेईई है, बहुत ही एग्जाम्स है, और सीट्स भी आ रहे हैं अभी। तो प्रिपरेशन को तो कंटिन्यू करना चाहिए, और एक बात है, मेहनत झलकना चाहिए, मतलब आप जो कर रहे हैं वो अब दिखना चाहिए कि आप हाँ सही से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके ऊपर आप ऑनेस्ट है, मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन ऑनेस्टी नहीं है तब कुछ नहीं होगा। ऑनेस्टी होना चाहिए, और उसके साथ डेडिकेशन होना चाहिए तब, और कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तब हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। Okay. Acha, Indrajit, now I'm coming to written part of HAL. Please tell the students how was the written part of HAL and they're well versed with GATE kind of exams. तो या। आप उनको बताओ कि written exam कैसा होता है HAL का? So written exam, there were total 160 questions, comprises of 160 marks, out of which 100 questions were from technical and 60 questions were from non-technical. And in this 60 non-technical questions also, there were 40 questions from reasoning and aptitude and 20 questions from GK and current affairs. So in order to crack this particular exam, what you have to do, you have to score well in technical, because we don't know, means question may come from anywhere in non-technical like GK and current affairs. Yes. So try to score around 80% marks in your technical, and the 40 marks whatever we have for this thing reasoning and aptitude. So there also you have to score pretty well, like 30 to 31 is a good mark. And if you able to score 30 to 31 marks in out of 40 in this reasoning and 80 marks in technical, then after that this GK and GS, right? So in this part you can only hardly you need 7 to 8 marks to qualify the written. And even if you qualify, then also you have fair chance in interview. So Okay. Okay. Wonderful, Indrajit. So you did that. And now we are coming to interview part. You know, YourPedia is the largest platform which mentors students yeah. for that. And students come to this platform for knowing that what kind of questions were asked in interview, and it has to be very very detailed and authentic, Indrajit. So recently ही interview हुआ, result आ गया, and I'm very sure you remember the things. तो please डिटेल में हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करें आप कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछे, फ्रॉम एचआर, नॉन एचआर, टेक्निकल, जो भी था सारा प्लीज शेयर कर दें आप। Yeah, sure. So I entered into the interview hall. So there was total 6 panelists were there, 6 interviewers was there, and one from HR and others from technical background, I think. So the first question was introduce yourself. So I answered the question properly because I prepared from YourPedia from videos of Subia ma'am, so which really helped me in answering that question. Introduce yourself. Then after telling that question, after answering that question, they directly went to my BTech project, and they told me to discuss your BTech project in brief. So that also I discussed, and then they told what's the application of your BTech project from the technical point of view or from the HL point of view. So that also I tried to explain, and somehow they agreed also. Then after that, directly that HR ma'am asked me one question that is related to why management training, why not design training? So you have a good command in technical, but why you want to opt for management? Why not for design?
So that also I have prepared in YourPedia mocks, and the same questions were told to prepare. So I prepared, and then exactly same question asked in interview as well. So I could able to answer well. Then from there, as I'm currently working in a private IT company, so then there were one more question related to that. Why you want to leave your current organization? So why you want to leave your IT job and why you want to come HL? So that also a similar kind of question which I prepared in YourPedia HR mock snaps. So I could able to answer these questions correctly. So that was my HR part. Then from technical side, so they asked a question related to controller, because in electrical we study controller and compensator. So one question was there, what is controller and what is PID controller? So that also I could able to answer correctly. Then with following with that, so one more question was, what is a tertiary winding in a transformer? So that also I could able to answer. And after that, one more question was how to linearize a non-linear system. So that is related to control system and signals. So that also I answered properly. And after answering those questions, they told that, okay, your interview is over, so you can leave now. So that was my Okay. interview thing. Yeah. Now, Indrajit, I'll ask you a couple of things here, which students normally ask. Number one, what was the duration of interview? So it was around 14 minutes, sir. 14. 1-4. 1-4, yeah. 1-4. Was that same for everyone? Yeah, it was varying in between 8 minutes to 14 minutes, 14 to 15 minutes, means in between 8 to 15. Can we say duration of the interview is a criteria for selection? I mean, if more the time, more is the probability? Yeah, somehow we can say that, because they are happy with you, interacting with you. So that's why they are interacting more with you. So that way we can say that, yeah, if your interview goes beyond 10 minutes, so then, yeah, you have definitely a fair chance in final selection. Yeah. Are there any technical subjects which are more important for HL interview from your branch? Yes, correct, sir. So I will suggest to prepare core subjects, like for electrical engineering, we have electrical machines, power systems, and power electronics. So try to prepare these three subjects very well. And apart from that, some basic subjects like circuit theory, so there are signals and systems. So these also you have to prepare. So you should have a good knowledge in these subjects. They give you chance to tell your favorite subject? No, so they didn't ask that, but they asked all the questions from my core subjects only, from my projects and from core subjects. Since you are in job for last 5 years, did they ask you questions from your job? Yes, correct. So at the last, they asked me what kind of job you are doing right now. So I'm doing a software testing job. Then they asked what is the role of software tester in an IT company and why is it needed to test a particular software. So that also they asked, and I answered the question properly. Okay, so Indrajit, now it is almost 5 years you are in job and BTech project में बहुत पहले किया है BTech project. So do they ask BTech project to the students जिनको बहुत time हो गया graduation किए हुए, and to what level do they go inside it? So actually, they will ask if you focus more on your BTech project in the introduce part itself. So that's what I did, because I am confident in my BTech project that I can answer the question. So that's why I give more focus on my introduction part, the BTech project. So if you focus more on that part, then definitely they will ask question from your BTech project. So you have to drive the interviewer in which domain you want to. Yes. Flow So the that means interview. that driving the interview in particular direction really works. Exactly, correct. Yeah. कितने पैनलिस्ट थे, कितने लोग अंदर बैठे थे इंद्रजीत? 6 panelists there. One was female and other 4 were male. Many times student ask about the dressing sense. Yeah, so dressing sense, I think it's quite means it is explained properly in Subhya ma'am's video. So means they can check that video in YouTube. So that was the proper dress code for interview. जब आप अंदर जाते हैं तो डोर खुद खोलते हैं या कोई खोलता है आपके लिए, एंड कितनी दूर वॉक करना पड़ता है, एंड हाउ डू यू सिट? नो, मतलब डोर खुद को ही खोलना पड़ता है. खोलने के बाद वो जस्ट 10 मीटर्स होगा, 10 मीटर से 15 मीटर्स की दूरी पे सब बैठे रहते हैं और एक चेयर रहता है दूर में. वो चेयर जो है वो मतलब 7-8 फीट के डिस्टेंस में रहता है पैनलिस्ट से. तो वहीं पे जाके खड़ा होना है, फिर आपको बोलना है कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम. वो बोलने के बाद वो लोग खुद ही बोल देगा कि यू कैन टेक योर सीट, या आफ्टर दैट यू कैन. तो आपको जब इंट्रोडक्शन करना है तो आपने सबके साथ हाई कांटेक्ट मेंटेन किया था वहां पे? Exactly, yes, you have to do that. So introduce yourself, that question will be asked by only one interviewer. So while answering the question, you have to maintain eye contact with everyone, each and every one of that panel. So that you have to make sure. इंद्रजीत, आपको कुछ लिखने को भी दिया गया था, एंड डिड यू राइट आल्सो, स्पेशली इन टेक्निकल क्वेश्चंस? No sir, they didn't give anything to write. Okay, so environment was cordial inside? Yes, yep. They will try to calm you. After that they will ask the questions. मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोडक्शन इंटरव्यू में होता है कॉन्फिडेंस एंड कामनेस.
वो करेक्ट। कैसे कोई स्टूडेंट ला सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी के बाद भी लोग नर्वस होते हैं। सर, कॉन्फिडेंस और कामनेस लाने के लिए मेन चीज है प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको स्नैप्स या फिर मतलब एचआर मॉक या टेक्निकल मॉक कोई भी देना पड़ेगा। तो देने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं बोलूंगा कि योरपीडिया ही है, जो कि ऑफर कर हम्म। रहा है टेक्निकल स्नैप्स भी ऑफर कर रहा है, एचआर स्नैप्स भी ऑफर कर रहा है और फुल मॉक भी दे रहा है। ओके। तो सो इंद्रजीत, आप आपका ज्वाइनिंग कब है, कब होता अभी तो है? सर मेडिकल का डेट दिया है, नवंबर का फर्स्ट वीक में मेडिकल होगा, तो उसके बाद शायद ज्वाइनिंग हो जाएगा दिसंबर के एंड आपने में। मेरे को अभी बताया कि आपने एचएल 2021 में भी दिया था, जिसमें आपका रिटर्न नहीं हुआ था, लेकिन अभी आपका हो गया 2023 में, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोबारा सीट्स आएंगी? या हाँ सर, वो तो आएंगे, क्योंकि इंटरव्यू में भी बोला था कि वो अभी एक्सपेंशन मोड में है। और अभी हम्म। प्रोजेक्ट मिल रहा है, बहुत सारा फॉरेन प्रोजेक्ट भी आ रहा है, बहुत सारा इंडिया का प्रोजेक्ट भी आ रहा है, ये तेजस के हम्म। ऊपर भी बहुत सारा काम हो रहा है। तो ये लोग का तो मैन पावर का नीड तो है ही, तो रिक्रूट तो करेगा, जरूर करेगा। हम्म। अच्छा, एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू यू? So the last thing would be, do not lose hope. So just prepare well and be patient. Means you have to be patient, and consistency is needed for any technical preparation. And once you're able to crack, then just prepare for the interviews very well. And yeah, definitely you could able to crack well. So if I can, then you will definitely. Sure. And let me tell you, इंद्रजीत, it was wonderfully spoken session with you. बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा आई से इंस्पायरिंग रहेगा ये बच्चों के लिए, स्पेशली बिकॉज यू आर द पर्सन हु यू नो फॉलोड द पाथ विच नॉर्मली स्टूडेंट्स डू नॉट डू। आपने जॉब भी करते रहे, आप एग्जाम्स भी लगाते रहे, उसमें डिबेकल भी होते रहे, आप फ्री भी लगे रहे, आपके रिटर्न में मार्क्स कट ऑफ के पास थे, आपने होप रखा और आपने उसको कन्वर्ट किया। ये एक मैसेज है बहुत बड़ा, जो स्टूडेंट आई एम वेरी श्योर लिसन करेंगे उसको, और वो पॉजिटिवली आगे चलते रहेंगे। सो देयर इज नथिंग टू वरी इन द लाइफ। एज यू राइटली सेड, अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? दैट इज अ मैसेज विच गोज। सो आई थैंक यू दिस मॉर्निंग इंद्रजीत, आप आए, आपने टाइम दिया मेरे को अपना, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, and you are going to play a very crucial role in this wonderful and prestigious organization. Thank you, Indrajit. Thank you so much, sir.